So just want to thank you all for joining this evening. Want to just give a quick intro on Sanjeev ji. So Pandit Sanjeev Kumar is an international renowned. 1 second, Prabhakar. Somebody texted just now, he cannot listen. Can all of you listen, or sorry, can just, yeah, okay, I said yes. I think I asked Rema also. Yeah, I think, okay. So Sanjeev ji is an internationally renowned, most accurate Nadi and Vedic celebrity astrologer. And he has mastered Nadi astrology and consulting almost like over 65 plus countries. And he's doing these predictions from last 27 years. He's one of the best astro consultant trusted by many people for the predictions across the globe. And his various most accurate predictions like be it Gujarat election or Himachal election, Russia-Ukraine war, be it about COVID, lockdown, many more, okay? And he has received a title and an award, Living Legend in Divine Sciences, from the Chief Minister of UP, Shri Yogi Adityanath ji. And Sanjeev ji uses ancient Nadi Sutras for perfection in all aspects of predictions. And he also specialized in Vastu, numerology, palmistry, mantras, homeopathic, and many more, which are all highly effective. And he has taught Nadi astrology to hundreds of students across the world. And they enabled them to become a Nadi professional astrologers too. Right? And Sanjeev ji is devotee of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, and also he is a sky breath meditation teacher, a happiness program teacher in India. He comes from astrologers family, and he started astrology from when he was 9 years old, from his father. He was like doctor and astrologer, and he believes, Sanjeev ji believes, with the grace of Guru and with the devotion, astrologers, prayers, and rightful karmas, one can be protected and can change many things positively up to great extent. So without much delay, I would like to welcome Sanjeev ji to kickstart this today's session. And welcome, Sanjeev ji. So you are on mute, Bhaiya. I think just let me unmute. Thank you so much, Prabhakar ji and the whole team for inviting me for this talk and for such a lovely introduction. Although it's all his introduction, not mine, in the sense that all is his grace. So, yes, let me, you can. Okay, let me. So before we start, I think let's chant Om 3 times. Take a double breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. I'll chant Om 3 times.
Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. Good. If you all can open your cameras, it would be good to see you all. Okay. So, so today we will discuss a very interesting topic of marriage, relationship, and spices. So, spices has two terms, so we'll explain that as well. So, this is a very interesting topic, and I tell you, in astrology, the majority of the question is from the two areas, you know, relationship and finances. So if you, see majority of the data across the world or across the, astrologers, people coming to astrologers for guidance for sure in two areas mainly, and most important is relationship. Relationship is the higher priority than finances. You might wonder why. you know might be because relationship is something very important and very personal to every individual, and everyone is sometime or the other, entangled in some or the other relationship, and facing some or the other challenges. Now, here we talk about marriage before, love marriage also. So before marriage, after marriage, you know, till living a happy married life or divorce or separation, everything. We'll cover everything about marriage, including matchmaking also. So might be wondering what. So let's say there are different phases of marriage, So once the boy and girl, we are talking about boy and girl only as of now, okay? So once the boy and girl are in the eligible age of marriage, and the intention is to get, intention is to get married, they start looking for the groom or the bride, like basically the matchmaking and everything. So things started from that, and obviously there are so many stages from matchmaking to muhurta to fixing the day and then getting married, and then all the stages further, what are love and fight all goes together. Now here astrologically, see, this is a very important session in the sense that I'll give you some astrological insight as well, right? So just listen carefully. If you have any question, keep it with you, and then you can type and chat as well, and then I'll tell you about Nadi astrology also, and then maybe we can have Q&A sessions. Okay. So the second house is the house of family in astrology. Second house is the house of family. Seventh house is the prime house of spouse, partnership. Okay. And 11th is gain. Gain of partnership, gain of spouse. So for marriage, it is very important that we should have our combination of, the star should indicate the combination or the energy of 2, 7, 11. Second house, 7th house, 11th house. At the time of marriage, at the age of marriageable age. You don't look at this combination when the child is 12-year-old or 16-year-old. At the age of marriageable age, maybe in India we can say 24 to 28, something like that, 25 to 28. In US maybe 28 to 32, something like that, right? So
at the marriageable age, when this combination come or this energy come in Antardasha and Pratyantardasha, the result happens. See, the human life is divided into timelines. And timelines are of three types. Their timelines are divided into three segments: Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha. Mahadasha tells you the bigger picture of the life. How's my home, environment, my living standard, everything. If Mahadasha is not good, you won't be able to grow much in life. You won't have a comfortable environment. Antardasha and Pratyantardasha tells you what is going to happen in your life right now. So Mahadasha is usually of 10 years, 20 years, 7 years. Antardasha is of maybe 2 years, 1 year. Pratyantardasha is usually of 2-3 months. 6 months to 2-3 months, depending on the planet. Now, if Antardasha at the time of marriageable age of the native, if the combination 2, 7, 11 comes, the stars indicate, that combination, that energy, then this is the time of getting married. Okay. Now, the other person, boy or girl, that chart also indicates the same combination, same energy. That is the time when the person will get married. That is the time when the person will get married. But before marriage, the question comes of matchmaking. And what we traditionally used to do is, we used to go to maybe some site or some panditji and say how many gunas it is matched, which is not the right way, because gunas are not the criteria for the right matchmaking. Gunas are never a right criteria. Maybe 500 years back it would have been, but not now. So matchmaking, gunas should not be considered at all. Maybe 5% of the value gunas has. Not, people, what they do is they go to the site or go to some person, they see, okay, 32 gunas, oh, it's a very good match. 28 gunas, okay, it's still good. 18 guna, not good. 12 guna, not good. 3 guna, not good. Something like that. People say 18 and above. This is absolutely a wrong criteria, because we have done lots of studies, maybe hundreds and thousands of studies, case studies, where we have seen 28 gunas to 32 gunas, also people get divorced. Okay. Many cases. So it is not that 30 gunas is good. It is actually, the reality lies in the energies, which only and only Nadi Astrologer can do justice. So matchmaking, I tell you, in the whole universe, the best thing is either to seek from the divine, right? The guidance from the divine. Second, at the worldly level, I would say Nadi Astrology, because it evaluates the energy between the boy and the girl and checks whether, this energy is matching. And the energy matching criteria, there are a lot of 10, 20 factors, health, wealth, finances, obviously, the alignment, the love and the bonding, between each other. So there are so many factors. How is with mother-in-law? Obviously, you have to match the chart with mother-in-law also. Although it is written in the girl's chart, how the relationship with the mother-in-law will happen. So you have to match the energies. So 2, 7, 11 is kind of energy which is matched with the boy or the girl chart. And then we say, okay, this is the right match. And suppose, usually you'll find in general level, people who have very good career, extremely good career, may not have a very good married life. Why? Because obviously the person is busy at the office all 18 hours, 20 hours or 16 hours, don't have time for spouse or whatever kids. So the conflicts happens. So that energy is also seen, whether it is balanced or not balanced, whether the person is, going in the career in a good way, or he's managing the spouse well or not well. And how is the ego level? How is the communication level? So we check all the factors and at least make people aware that, okay, these are the factors. Even if you want to get married, these are the factors you need to take care. These are the remedies you need to do. Otherwise, it will create problem. And we have seen exactly whatever we have said, whatever, I have said has come true exactly. So
So there was a case of many cases. People are dating for 4 years, 5 years, come to me, okay, we need to know the marriage date, when it will happen. When I see the chart, oh, there can be difficulty and challenges. And they say, no, we are good, we are dating, we know each other and everything. I said, okay, that's good. I'm not saying anything. I'm just saying that make aware of these things and do some remedies, because I see trouble. And just after marriage, within 2-3 months, they said, they came to me and said, we want divorce. Why? It is not that the person has changed, the energy has changed, because before marriage, some other energy was active, and after marriage, some other energy is active. So you say the person has totally changed. The boy or girl can say, it is not the person change, it is the energy which has changed. Because first, before the marriage, the love and the affair energy, which is 5th house and 8th house. 5th is love, 8th house is external sexual organs, that or 12th house is blood pleasure. These were active, 5, 8 and 12. 5, 8 or 5, 12 is love affair. Okay, this was active. But after the marriage, this got gone. And then 2, 7, 11, 2nd house, 7th house, 11th house. So 5, 8 is somebody has good 5, 5th and 8th house. They can have a good love relationship. But as soon as the marriage happens and they don't have the 2, 7, 11 energy, it will be like not a good married life. So that's how the scenario changes. It's basically the energies. And we have seen like close to hundreds and thousands of charts on marriage and relationship and everything. And what I observed, like another case where people, the person got married and they have consulted some very top Vedic astrologer or something. It is not that something is wrong with the astrologer. Astrologer is fine. He's giving up to the knowledge, but the technology, I would say, is not right. The way we see it is not right. So there's a marriage will be very good. And then they, after a few years, they come to me and say, well, see, just check. They didn't tell me anything about the chart. I said, the married life is going very negative. And why you got married with such a person after 1 or 2 years? Oh, we have consulted this, and they said it's good marriage and everything. So, the total wrong, opposite interpretation. So that's why I say guna is not a criteria. It is hold only 5% of the value, not more than that. Okay, I just give 5% of the importance, and rest we match. We match what are the energies and all the different parameters, and then say, okay, you can go ahead with the marriage. That is not possible in any other technology, because we, the way we see in the Nadi astrology is very, I would say, precise. Okay, very precise and very accurate, because you see the nakshatra and get to know that, okay, this is the right. Now, when we talked about love, so let me, so this is the spice part. Okay, let me come to that later. First, marriage. Okay, so marriage, I said 2, 7, 11. And suppose the person has an energy, there's an opposite energy called 1st house, 6th house, and 10th house. Okay, which is, and I go little on that. I just say it's negative energy, because, need little time to understand that. So one is positive energy, one is negative energy. So whenever the 1st house, 6th house, and 10th house get activated, there's a distance between the husband and wife. So distance is not a bad thing. They are busy. Suppose wife is busy, husband is busy, that is okay. But wherever the communication, 3rd house is communication, and 8th house is obstacle. Wherever you have 3rd and 8th or 8 and 12, 8 is obstacle. See, there are 3 kinds of energies, very powerful energies, which makes life miserable. 6th house, 8th house, and 12th house. 6th is disease, death, litigation. 8th is obstacle, insult, misfortune. 12th is losses, expenditure, outflow. So whenever 8th and 12th house comes with the negative energy of the marriage, the fight happens between the couple. And it's very strong fight with 8 and 12. With 8, only 8, it's a moderate, kind of arguments and everything. And we see exactly when it started, which month it started, which, time it started. It pinpoints the weeks as well. It is so accurate. So, the positive and the negative energy. So, what is conflict going on. So, and suppose the conflict is there between husband and wife. They're saying, no, I'll go my way. She'll go one way or other way, and he'll go other way.
and they're ready to go for separation or divorce. They come to me and say, oh, no, this is just for 6 months. That is where the benefit of astrology is. When you know the timeline, because you saw it will go forever. The conflict will go forever. You think like that, and they say we can't live together or something like that. But we say, oh, this is the time has changed, and within just 6 months or 1 year, it will again change and they will back to normal. See, we are not more than just puppets. I tell you, that is the reality. The string happens from there, and you act and behave like that only. Although with Guru Kripa and Guru Grace, you change certain things to a certain extent. But if you really learn Nadi astrology, you'll know the day or month, your Pratyantar or Anta starts, the day it will, the things changes. It is so precise from the day itself. So the negative energy, so people are, I told, no, wait, no, there's no problem. This time will come. So I check the past as well, verify the past as well. This was right, this was good time, this was not so good time. Okay, this time is tough. Don't worry, do this. These are the remedies. And after this, so one story, the person went to, the girl came to me, the woman came to me and said, no, we are on the verge of divorce and everything. He has gone out from the home and he says, he won't divorce. I said, no, hold on. You're in charge, just have patience, like before end of December, like last year, 22, he'll come back. Don't worry, he'll come back and you'll start again. Don't worry. I think she came in May, June or something like that. Hold on. So they were like kind of away from each other for almost 6 months. And then in February, she reached me and she told me that exactly on 30th December, he came back and he told we let's give another try. As the time shifts, the mind shifts. So it is all governed by somewhere else, because that thought comes and you start acting like that. Right. So astrology is really helpful in the conflict cases, in the matchmaking, in living the life happily. Right. Now there comes the question of, and suppose the negative energy is too much, in one chart also, another chart also, then it goes for, separation and divorce. That also we can see because sometimes the divorce cases are so long, 5 years, 10 years, 2 years, 3 years. India, it is more this critical. I think in US, it might be a little easier or whatever. So, we can exactly pinpoint when the divorce will happen and when it will happen mutually or it will happen through court and everything. So many things you learn, basically. You learn Nadi astrology, right? Then comes the question of love, affair, and relationship. Whether it is before marriage or after marriage. So 5th house and 8th house, I tell you, is the relationship. The energy of love and relationship. 5th house and 8th house, when they combine together, you met with somebody, maybe boy or girl, and you get into the affair and relationship. Now, here is the thing, that if 5th house and 8th house, it can happen before marriage also, it can happen after marriage also. So extramarital is also possible. But there's a catch. You can't say every case is, every person who has 5th house and 8th house energy is having extramarital affair or isn't affair. It depends, because at Swadhisthana chakra, you have both creative energy and sexual energy. So 5th house, so either 5th house and 8th house is a creative energy, you channelize in the creative field, or you get into that sexual activity or relationship and everything. So that both are so it's not easy to judge what is happening in somebody's life. So that I definitely train my astrologers to really judge on the right thing and all those things. But yes, of course, when some companion or some partner will come into your life. And then the twist is, sometimes okay, my relationship is there, but sometimes it is hidden. Nobody will know. Nobody on the planet will know except the astrologer. If he sees your chart, that okay, you have a hidden love affair, because 4th house is hidden. So 5th, 8th, or 4th is connected, or 5th, 12th, and 4th is connected. It will be hidden love affair. Nobody will know. If it happens after marriage, your wife will also never know. Nobody will know that you have an affair.
Now here the two planets come into role, Jupiter and Mercury. If Jupiter is there and Jupiter Mahadasha is going on, you will have affair with two people for sure. And if it has that energy, you will have two girls or two boys in your life, vice versa, whatever. And if you have Mercury Mahadasha or Antardasha going on, you may have multiple people. So that is how it indicates. And we have seen many cases, it exactly precisely happens like that. If Mercury Mahadasha is there, then you might have many people in your life. Relationship, and Jupiter is there, at least two. Oh, maybe one is divine and one is your husband or your wife. That is okay. That is also possible. So here comes the question of divine love. So 5th house and 11th house is also a divine love. Divine love. So, if you want to know how is my spirituality, how I'll grow in my spirituality, when I'll be more closer to the, divine or the guru, or how will be, my journey ahead, you'll exactly know. And it happens exactly that whenever, person becomes very close to Gurudev or very close to divine, it shows that, okay, he will or she will get the, special attention because her chart has that energy, right? You might have seen few people get special attention, right? Everybody might have seen. That's why it's not coincident, because her or his chart have this 5th and 11th energy. So your spiritual journey, your spiritual thing in the coming time, how it is, by just knowing the energy. By just knowing the energy. Right? So whether you want to whether you want to know about your spirituality, your love affair, your companionship, your marriage, this is an awesome tool to get to know everything, actually. And suppose you have extramarital affair, and it is very normal nowadays, to have extramarital affair. I don't think so. You should break your marriage just because somebody has slipped on the path or something like that. It is not that, because it is, to be honest, nothing is on our control. Somebody has some give and take. He or she comes in your life, exchange happens, and the goes away. So one also knows when is the breakup happening, when is the things happening, and one should obviously handle these kind of issues very diligently, and very only experienced astrologer can handle this. And I've seen hundreds of thousands of cases where these were the issues and got settled. So because the wisdom of the guru, Gurudev's wisdom, and what you follow the remedies really helps to get out of tough situation. Because it is not a very good situation to be in person where there's a triangle or 4 angle or whatever angle. It becomes very difficult. So, but yeah, wisdom definitely helps, and the remedies definitely help, and the knowing about the time. What are we? We are karma readers. We are the time readers. Who are astrologers? Astrologers in one line are time readers. They have good knowledge about the time. They're the time readers, I would say. They can't change anything. They will tell you what will happen when. There's nothing. Whatever is changed, it's between you and the divine, because you have to do the remedies. Okay, see, only if you eat, you will get a stomach filled. If your mother, father, or anybody else, it won't happen. Yeah, prayers definitely can help, but not it's the remedy you have to do, and the prayers to the divine, or faith in the divine, and the wisdom from the divine, that definitely helps you to get out of troubles in the marriage life. Right? Now, we have talked about, so 5th house and 8th house, I tell you, love and affair. 5th and 12th house is again love and affair. 5th house and 11th house is again, this is divine love, divine connection. Then scandal. Sometimes you have seen this scandal happens in the love, or maybe after marriage, the burst happens. That is 5th house, 8th house, and 12th house combined together. They will give you a blast, scandalous love affair. So after marriage, so your wife got to know, or your husband got to know, or maybe before marriage, your boyfriend got to know, some other third person is involved. That is scandalous love, or something, or it is hidden and family don't know about that. And again, one day the blast happened. So that also you can see. That also can be measured. Scandalous love. Then breakup also, if you're involved in some love affair before marriage, after marriage, the breakup. And so one case was there when
when the boy and girl was totally there, against all the family. Girl was also very stubborn and said, no, I want to get married with this person. And the lady was very, very in much trouble because the boy chart was not good. And when you see the boy, that he was also not good, and big, I think, so a lot of negative qualities and everything. So the lady came to me, very elderly lady, and came to me, I can't do anything. Tell me what is going to happen. I saw the chart and I said, don't worry. By October, November, she came in Jan, I think. I said, maybe it's, a few years back. So by October, November, they'll have breakup. You just pray. Just pray and they will have a breakup. I said, oh no, I've tried all the ways, everywhere I've gone, but nothing is working. I tell, don't worry. Your girl will not get married to this woman, this man, basically. Your girl will not get married with this man. Don't worry, and just do this small remedies and pray. And obviously, you can share with, seek blessing from the divine. And exactly on those months, the breakup happened, and the next year, the girl got married to some other good men, basically. So this is how accurate and precise. And there are so many stories. I'm just telling you a few. There's so many stories, realities, basically. So this is about affair, relationship, hidden love affairs, scandals, marriage, and then after marriage, another important part is children. So when you have second house, so fifth house is house of children. So when you have energy of second house, fifth house, and 11th house, then the marriage consummate, in the sense, the child conceives, basically. Whenever you plan for it. So people come to me that when they would like to have a child, and they're trying for long and it's not happening. So we see definitely the chart and tell, okay, this period is more favorable, try in this period, it will happen. And if there are obstacles, you can get over that. So many people comes with or many miscarriages. There are so many stories of miscarriages, actually. And with the grace of divine, I would just say that after 5 miscarriages, the boy or the girl has born, basically. It's all the grace. It's all magic, actually. It happens. That is the story. Then, we've spoken a little about the divorce. So that is a, bigger thing where, once you give your 100%, then you can go for whatever separation or divorce. And we see that. And obviously, if suppose some third person is involved, okay, and you're seeking divorce from your wife, and the third person, the people show me, okay, I tell them, okay, show me the third person chart. You are interested. Your wife is not okay. That's okay. But where's the third person? Okay, show me the chart. And that is again the worst. So I tell you, you have a choice between two worst. Okay, which one you want to go? So like that, many things happen because person is not knowing what he's doing. So with the guidance of astrology, you know that, okay, whether you're taking the right step or the wrong step. Okay, that is very, very important. So in affair, relationship, your married life, your second marriage, all this, whether I can get married second time or not, yes, you can, definitely. If the stars are showing, yes, you can. So there are so many things you will know about the marriage, about the love. Okay, and children also. Because also so you can't, so in the universe you can't know about the birth of a person or death of a person. That is secret. Although we know, but no, it has to be secret. We don't tell it to anyone. Although I figured out the only in emergency cases on things, not that somebody comes to me and say, oh, how long is my life? No, we don't answer that. Right. But there are some techniques where through, I do teach age calculation, but that is not so precise, but there are some very precise technique. But this has to be kept secret. So we don't say it has to be added in somebody's consultation. It is just for knowledge. Okay. And for birth of the child also, we just say, when the child will conceive. Okay. And suppose the doctor says, okay, the kid is cesarean or something like that, it will happen through surgery. Then we give a muhurta. Okay, when is the best time for kid to get out and in this world, so he have a good, comfortable life. And I've given many,
cases where I've given the time and the child has gone out, and it has definitely beneficial for the whole family and everything, the birth. Although it is not in our control, we can't say. It is only through the divine wish the person has came to me, I've given the muhurta. So it is a bigger plan rather than me saying or thinking that, oh, I've given the time. No, it doesn't happen like that. So it is a bigger plan with bigger mind which works behind the scene. So the person or the child have a good life, because at the time of the child, the person, the child, the birth happens, or the whole planet and stars alignment, if it is good, then his life or her life goes very, very good. So it is not that we are aligning, it is somebody bigger who is aligning this, right? So it's about marriage, relationship, and children. Okay. And the spices I told you. Now there's a question of comes whom you will get married. Suppose in a marriage, usually people ask, which direction and everything. So that is very vague. But yes, because on the planets, obviously on the DBA, Dasha, Bhukti, and Antar, whatever is coming in the DBA or Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha, you can suggest some directions over this direction, but I usually say keep all the options open. Okay, don't focus only on direction, because sometimes you might lose a good chance, because that is also 50-50 correct. But one thing is very important, whom you will get married. So suppose you have Jupiter in your Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha, or you can say it, or your DBA, Dasha, Bhukti, and Antar, you can say it. It's both the same one and the same thing. So if Jupiter is there, then you'll get married to somebody very respected, some teacher, some respected person. If Sun is there in the DBA, okay, in Antar or Mahadasha, you might get married to somebody who is very, some government official, higher authorities and everything. So planets decides, the qualities for the spouse whom you'll get married. Suppose it's Moon there in the DBA, then it is a very beautiful, smart, gentle person. Same with the Venus, same with the Venus. They both are good and smart stars, planets. So, it will come with more luxury and comfort. So Venus indicates that. Then you have, suppose, so person will have a very charismatic personality if, Venus is there. Mercury is there, then you might get married to a younger person. Okay. If Saturn is there, then it will be upwards. The age difference will be a little higher, maybe 5 years, 10. So elder person, you get married to elder person. If suppose in my chart it is there, then I'll get married to some elder person. Or if Mercury is there, then the younger person, something like that. Rahu, Ketu, maybe, somebody who is little, Ketu is little, maybe you can say outcast. Rahu is outcast, outcast, not in the religion, something like that can happen. Not in the religion, and outside the marriage, outside the religion, maybe somebody, suppose you're Hindu, you can get married to Christian or something like Muslim. That is also possible in Rahu. Ketu is somebody who has some deformity, somebody who has some deformity or some maybe some kind of disease or something like that. It is a possibility, some not really something which is not easily maybe identified or something like that, very minors, but deformed kind of thing, something maybe some finger is there twisted, some little thumb is twisted, whatever, something is there. Saturn will be much older, I said, and Venus is very charismatic, sophisticated. So this is the type of person you can get married when you are in that DBA, Dasha, Bhukti, Antar, that is going on. Okay. And then comes if you are there are so many integral, I think there are so many other details also which usually it's not a part of talk. I do teach in the course, because that is again going much deeper in that. But I would say that you can know each and everything, each and everything about the person, the details, the married life, how the person will behave, through which sources one person will earn,
everything about the married life, about the health, about the mental health, physical health, emotional health, everything you'll know. And then you match the profile, the finances, the energy. Somebody has more negative energy. Suppose your son is there or your daughter is there who has more negative energy. You look for a person who is more positive, right? And only through chart you'll know, not through by meeting, not through face, not through photograph. No, everything can deceive you. So through the astrology, so this is a tool, like you have so many tools, financial tool, all those tools. The same way, Nadi astrology helps you in a very precise way. Right? So this is about the topic, and we'll take question and answer. But before that, I'll just tell you about the Nadi astrology. So Nadi astrology, what is beneficial, what is good about Nadi astrology is that it tells you the most accurate, most precise events and happening in your life or anybody's chart you are checking. Vedic astrology is not meant for prediction. It is just for gyan. You can do a lot of good gyan. That is all. It's good. It's not meant for prediction. See, in the Nadi astrology course I teach, we go through at least 400 to 500, maybe more than those case studies. We check all the cases. And I don't believe in just teaching astrology. I believe in making you an astrologer. There's a total different way of seeing the things. Making you an astrologer and teaching you an astrology. Because I teach how to consult people also, what to say, what not to say. So many things I teach, so many nitty-gritties. How to take up consultation, how to start charging. See, that is a separate thing altogether. That's another, you can say 3 months course, but I tell that here, So the aim and the focus is how to make you, how to enable you for seva, how to enable you for your career, maybe, this separate career, maybe, as a hobby or whatever, you can earn money. And usually I say, whatever you earn, donate at least 20 to 50%. If you are a part-timer, donate 50%. If you are a full-timer, at least 20% you should donate to all my students and see the magic happening in your life. Right? When you give, the abundance comes. You don't have to hope for the abundance. It automatically comes. It's a rule. Whatever you give, it comes as abundance, So definitely we have to be watchful of our actions also, in other way as well. So what I'm saying is, Nadi astrology is very, very precise and it is very easy. If you know the counting 1 to 10, you can learn that. Don't think I'm 60, I'm 65. I've taught all the people from, like, I think the oldest student I have is 65, 68 some years, So, and from 20 onwards, 18 is the minimum age. And anybody can learn. It's very easy, very simple. See, astrology, to learn astrology, there are only 3 rules. What are the rules? Practice is the first rule. Second rule is practice. Third rule is practice. Okay. So these 3 rules you have to follow. Practice, practice, and practice. Okay. Nothing else. And I made sure that in my classes and and I also take practice classes as well. You practice a lot. Once you practice then only you can make the thing perfect. Otherwise not. And it is a 6 months course, 2 hours every week. Not much commitment is required from your side. Just attend the class. And if in case you miss the class, recording is available. You can see the recording, come back in the next class, because I do take quiz and everything. So you remember the last class or not, right? So make sure that you are learning progressively. Okay. My purpose is to make you astrologer, not just to teach astrology. There's a key difference between both of these. Okay. And this is an expert level professional course. Okay. People come to me doing 5 years, 10 years of astrology. They also learn this and they got amazed. People who are fresher, they don't have any astrology knowledge. They are in 6 months also, they do. You might have seen a lot of testimonials. Maybe I'll send you the WhatsApp group again. There's so many testimonials. So many people are amazed to learn. Within 4 months, they are doing amazing prediction, 4 and 5 months. So just don't miss this golden opportunity. Enroll yourself, and the beautiful part is, this whole seva, this whole donation is going to WCF, Gurdev's work. 1100 USD is what we are charging, and the whole thing is going. So this is my seva for Gurdev.
Okay, the whole money is going to WCF. Nothing I'm not charging. I'm doing it as a seva. Okay, so I would request, and this is a golden time. See, when you're donating for such a big cause, WCF, and you're learning, this is a, you know, सोने पे सुहागा. भाई कोर्स आप बाद में भी सीख सकते हैं. मैं तो पढ़ाता रहता हूँ. 2 महीने बाद फिर शुरू होगा कोर्स, फिर 2-3 महीने बाद शुरू होगा. वो तो शुरू होता रहता है. बट ये वाला तो मतलब सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप पैसा मालिक को दे रहे हो. ठीक है, तो अबंडेंस भी वहीं से आती है. So it is you're going, you know, the money to the divine, and everything will comes from there, that energy only. So this is happening two ways. You're learning also and you're giving also. And then there is amazing, which Prabhakar ji has shared and the team has shared, you know, your company can also match the contribution and all those things. We will share on that. But don't miss this golden chance. You will go, if you are a teacher, you can do very good as a seva. You know, very good. This is a very good seva. It's a very good way to earn the money. You can start with small. I guide everything, what to do, charge, how to do consultation and everything. You know, after 5th and 6th months, I do. After 4 months, you do all the practice and everything. Then I guide on that part. So, you know, this is all a win-win situation for you all. And I would say that nothing in the universe is as precise, as accurate as this one. You might have seen my Twitter, you know, 95 to 97% of predictions are like dot on target. And those are still a difficult one, because mundane prediction is still a difficult one. You know, very, very difficult, I say. You know, usually one of the very great astrologer people can create or whatever. I said it's normal astrologer. It's a good, decent. He has some name. I will not take the name. So he was asking, oh, how's your accuracy of prediction on that particular prashna or something like that? I said 95% and above. Said what? I was like shocked. He said the whole world works under the 5%, the umbrella, and yours is 95%. So it was one long back when, you know, Ram Mandir was not happened, you know, and 6 months before he asked me. So I told, see, I have tweeted this and this will happen by his grace. And exactly on that day, Ram Mandir, you know, that thing happened. So he said me, so he has been teaching astrology since like ages, generations, right? So it is not what I'll be teaching, it is coming through him. His grace is flowing. I would say I would not be an astrologer without him, you know, his blessings. I would say this. You all know, you know, I've been a management professional, doing all these things, doing all the astrology part-time, but full-time and everything. I never thought of becoming an astrologer, to be honest. Although it was there in my genes somewhere. So, you know, the channel of seva is there. But yeah, so Guru enhances your qualities and everything. But I've never thought of it, to be honest. So I would say join this course and do this. And हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं ना, तो करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा. और दूर से ऐसे दिखते रहोगे यार ये करूं नहीं करूं, तो फिर अरे बिजी तो सब रहते हैं. Everybody is busy in their life. But just 2 hours, you don't have to spend extra time, at least not in the initial 2-3 months. Just attend the class, you know, maybe 15 minutes, half an hour in a week's time, just in a week. Of the summer, 15 hour, half an hour, just revise kar liya, wohi bahut hai. That's that much of time you need, right? And we'll start from basic 0, level 0. Our motto is 0 to hero. So if you don't know anything about astrology, you are a very good student. Because कुछ जानने के बाद क्या होता है, गड़बड़ है, उसको खाली करना पड़ता है मुझे. उसको फेंको, उसको अलमारी में रखो, उसको बाहर फेंको, बंडल बना के गुरुदेव बोलते हैं ना, बाहर फेंक दो. बस वैसे ही मैं बाहर फेंकवा देता हूँ. जो भी आपके पास है, जितना भी आपने पढ़ा है, whatever you have learned till now, just bundle it and throw it out, right? कौन, क्योंकि टीचर मैं रहूंगा, ठीक है, तो अपना खाली होके आना है, ठीक है, तब सब. क्योंकि जो ज्यादा इधर उधर सीख लेते हैं उनको तो और समझ में नहीं आता है, फिर उनको समझाना पड़ता है. अच्छा बंडल बनाओ फेंको. तो जिसको 0 है, जो क्लीन स्लेट है, वो इजी. तो अगर कुछ भी नहीं आता, बहुत अच्छा. बहुत कुछ आता है, बहुत साले किया है, तब भी अच्छा है, कोई बात नहीं, हम आपको नई टेक्नोलॉजी सिखा देंगे. तो ऑल कॉल इट एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो आप लोग जरूर सीखिए. और मैं एक बार सबके चेहरे तो देख लूं. अरे भाई सबने ब्लैक कर रखा है, भाई अपने चेहरे वेरे तो दिखा दो. तो so far the videos, we are about to end the talk, and I think और कोई है क्या? हाँ, सब चेहरे तो दिखा दे, हम सबके चेहरे तो देख ले. Very good, Mani, Anurag, Naveen, very nice, very nice.
भाई मेरी क्लास में वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, ऑफ नहीं, ऑफ से नहीं चलेगा, ठीक है, वो ऑन है, जो ऑफ करेगा उसको बाहर, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी यू। तो यू नो यू ऑल कैन डू, मीडियम इज इंग्लिश, हिंदी इज ऑल्सो आई से इन बिटवीन, तो आप लोगों के लिए अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो कोर्स तो आप आगे भी कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट, ओके, एंड जस्ट नीड 2 hours इन अ वीक, ठीक है, जस्ट 2 hours इन अ वीक, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट फैमिली। सी आपको कंसल्टेशन करना होगा तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, वो बात अलग है, बट कहने का मतलब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, यू नो सबको देख सकते हो, कर सकते हो, सो यू नो आई वुड से लर्न इट, और कोई भी एज है, एनी एज यू कैन लर्न, यू नो, आई सेड ना आफ्टर 18 and less than, or like any age, till you are able to work on computers, it is all good, and don't think you won't be able to, it is not मेरे बस का नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया, I have tried earlier also, मैं तो नहीं कर पाया, I tell you hundreds of case studies now कि जिन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता था, and they are doing good astrology, they are doing good prediction, so that is a, see I can't say without having that confidence and that result I have seen, so देखा है बहुत, ठीक है, तो आप जरूर करिए, आपने कहीं से भी फंडामेंटल किया हो, कहीं से भी कोई और एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया हो, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आप करिए, कोई मना नहीं, पर ये मत करिएगा। हाँ आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी पूछना है, आई थिंक वी विल हैव 1 to 1, कोई ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, आई थिंक यू हैव अनम्यूट एंड यू कैन से दिस, एंड माई सेल्फ एंड माई टीम विल आंसर। कुछ क्वेश्चन है, जय डाउट गुरुदेव है? पंडित जी। जय गुरुदेव, बताइए जी। I wanted to ask that, like, if somebody is not teacher, then is it easy to like spread the word and to do the हाँ practice? हाँ हाँ, ऑब्वियसली सब टीचर थोड़ी होते हैं भाई, देखो, सो सपोज इफ यू आर नॉट टीचर, डजंट मैटर, इट शुड बी गुड इन डूइंग पब्लिक थिंग, बेसिकली इन द सेंस कि यू नो आप लोगों को, लोग आए आपसे, आपको बात करना अच्छा लगता हो कम से कम, नहीं तो बोलेंगे अरे ये कौन मुसीबत है आ गया, राइट, सो आपको लोगों का, आपका एटीट्यूड हेल्पिंग का होना चाहिए, गाइडिंग का होना चाहिए, it doesn't need, there's no qualification of teacher, I said the qualification is your interest in astrology, that is the qualification you have, Okay. your commitment in astrology, that is the qualification I need, your commitment and interest। भाई Sure. मेरी क्लास रोजाना नहीं है, बाकी ये है कि आप अगर टीचर भी नहीं है, आपका कोई नेटवर्क भी नहीं है, वो मैं फिर गाइड करता हूँ कैसे कैसे आपको बनाना है, क्या करना है, you have to follow my advice, definitely to that। Okay. And one more thing, like, I have heard that just in learning basic only take a lot of time. So this is a question stuck, that how we can learn everything in just 6 months complete. यही तो जादू है, यही तो जादू है, मैं जादू सिखाता हूँ, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं, जादू सिखाता हूँ, तो यही तो बात है ना। तो बेसिक्स में क्या है, देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो 20 साल भी पढ़ते रहोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है, तो वैदिक नहीं है, ये नाड़ी है। तो वैदिक का जस्ट हम लोग मतलब समझ लो, एक मैं आपको सबसे पहले जो भी क्लास करेंगे उनको कुछ घंटों के वीडियो दूंगा, और ऑब्वियसली जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1-2 घंटे का मैं जो जरूरत है खाली वही बताता हूँ, उसके बाद हम वी कम्स टू नाड़ी। सो बेसिक्स में पूरा वैदिक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो फंडामेंटल डिफरेंट है, अगर आप उसको पढ़ोगे सब करोगे तो लॉस्ट हो जाओगे, तो वहां का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चाहिए, उसके बाद नाड़ी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो जब ये मेरा कोर्स स्टार्ट होगा, इसमें ऑलरेडी वैदिक का 1-2 घंटे का जो जरूरत है वो है, इंक्लूडेड है, बस उसके अलावा नहीं। So it's like और in बताइए 6 क्वेश्चन। months we will हाँ। complete, like in this 6 months we'll complete each and everything, whatever we need to learn. हाँ हाँ, देखिए मेरे टॉपिक्स क्या क्या मैं बताता हूँ, देखिए टॉपिक्स क्या होंगे, सबको जो भी आपके लाइफ के मेजर इवेंट होते हैं, क्या इवेंट होते हैं, मैरिज है, फाइनेंसेस है, एजुकेशन है, लिटिगेशन है, मैरिज है, जो भी कुछ मैरिज हमने देखा, ट्रैवल है, सेटलमेंट है, भाई ट्रैवल में भी है, प्रॉपर्टी है, 10-12-15 टॉपिक है, जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं, एवरीथिंग यू विल कवर, एंड आप प्रेडिक्शन ना 3rd क्लास से शुरू कर देंगे, सोचिए, तो सोचेंगे अरे ये कैसे हो पॉसिबल है, 3rd क्लास से, लोग 2nd क्लास से शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए कि आप 2-3 महीने में तो ऐसे बन जाते हैं, विद इन 3 months यू बिकम लाइक यू आर प्रेडिक्टिंग फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, लाइक दैट। फिर 4थे महीने 5वें महीने वो तो सिर्फ प्रैक्टिस चलता है, यू नो, इट्स लाइक दैट।
सो डोंट वरी, अगर कुछ भी नहीं आता है आप कर सकते हैं, गारंटी मेरी, ठीक है, कोई नहीं देता होगा एस्ट्रोलॉजर। आपको सिर्फ ये करना है, क्लास अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करनी है। मेरी क्लास, ऐसा कोई हुआ नहीं आज तक जिसने क्लास अटेंड की और उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आई। कितनी बड़ी बड़ी आंटियां भी आई, बड़े बड़े लोग भी आए, एकदम जैसे लगता था कि कुछ नहीं आ सकता, वो भी सीखे। बट क्या कमिटमेंट चाहिए। अब आप एक क्लास करोगे, उसके बाद करोगे नहीं क्लास, तो फिर कैसे होगा। आपको क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स के लिए 24/7 मोबाइल ऑन रहता है। भाई जिसको भी कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर ले, मैं आंसर करता हूँ एज सुन Sure. एज आई सी दैट। जब भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। Just one last question. Thank you, Panditji. Like as you said, for beginning 2-3 months, we just need to attend class only. Like if we missed, then we can get the recording and we'll attend that. But after 2-3 months, how much time is need to take to practice? Like if suppose बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सी आई सेड 1 hour in a week in starting with, ठीक है, और half an hour in a week, then after 3-4 months थोड़ा दीजिए, 1-2 चार्ट करिए, यू नो, half an hour 1 hour is more than enough, okay, राइट। जैसे आप प्रैक्टिस में जाते हैं, ऑब्वियसली 4th-5th month then I make you practice 2 charts 3 charts daily, got it. बट वो ज्यादा नहीं लगता, यू नो, मुश्किल से 1.5 hour 1 hour 2 hours, इससे ज्यादा कमिटमेंट नहीं। और आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा, Sure. वो तो खुद ही इंटरेस्ट आएगा। लोग पीछे पड़े रहेंगे, अरे हमारा चार्ट देखो, हमारा चार्ट देखो, Yeah, ठीक है। it's about the timing. Yeah, actually, like if suppose somebody is busy with the kids and family, that's why I'm asking. नहीं कर सकते हो, इतना इतना नहीं है, कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। किड्स भी हो, एल्डर्स भी हो, आपको घर का भी सेवा करना है, अपना भी करना है, ऐसा नहीं है। देखो, चार्ट रीड करने में कितना टाइम लगता है। मेरे जो स्टूडेंट्स अभी 5 मिनट में रीड कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट में पूरा चार्ट आपका रीड हो जाता है। सोचो, Mhm. 1 चार्ट एक रीडिंग हो जाती है 5 से 10 मिनट। ज्यादा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके करके बनता है। शुरू में हाफ एन आवर लगता है, फिर धीरे धीरे करके आ जाता है, 15 मिनट लग जाते हैं, फिर 5 मिनट भी लगते हैं। मेरे को तो 30 सेकंड्स लगते हैं, मैं तो पलक झपकाता हूँ, चार्ट रीड हो जाता है, बस इतना ही लगता है मेरे को टाइम। मे बी वो 2 सेकंड्स और 5 सेकंड्स, तो बस इतना ही लगता है मेरे को टाइम चार्ट रीड करने में, इससे ज्यादा लगता नहीं। खुला चार्ट और रीड हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और इतना कोई कमिटमेंट नहीं लगता है इसमें, और धीरे धीरे आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप क्लास करते हैं और हफ्ते में आधा घंटा भी दे देते हैं ना पूरे हफ्ते में, और 4th मंथ ऑनवर्ड्स आप, आई रिकमेंड देम टू डू एटलीस्ट फ्यू चार्ट्स अ डे, 5th मंथ में 6 मंथ्स में 2-3 चार्ट्स अगर करते हैं तो बहुत हो जाता है। और मेरे को नहीं लगता वो 1 घंटे से ज्यादा लगता है, तो हफ्ते भर में 1 घंटा बहुत है, ठीक है। Okay. उसके बाद अगर रोजिना देना है, रोजिना देने का डेफिनेटली मैं कहता हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा, अगर आप जब आप क्लोजर टू द एंड होते, राइट, लास्ट मंथ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। Yes. ऑब्वियसली क्लास में मैं कभी 20 चार्ट्स, कभी 30 चार्ट्स, कभी 10 चार्ट्स, ऐसा कराता रहता हूँ। कीप ऑन गिविंग सैम्पल्स। आपका प्रैक्टिस क्लास में भी हो जाता है, बट क्या है, खुद भी करना जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes. जी, सबको आ Pandit. गया? और किसी का क्वेश्चन? कोई? Thank you. सब कर लेते हैं। देखो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, बाकी बहाने तो बहुत सारे हैं। हमारे को ये करना है, हमारे वो करना, हम प्रायोरिटी करते हैं नहीं करते। भाई जो भी गुरुदेव का काम होता है, सारा काम छोड़ के करते नहीं करते। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में जी, क्या प्रायोरिटी करनी। और थोड़ा टाइम है, ऐसा नहीं कि दिन भर आप लगे पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेरा स्टूडेंट से नहीं कि दिन भर लगा पड़ा है, नहीं नहीं, 1 घंटा बहुत है भाई। अगर तुमने जब पीक प्रैक्टिस चलता है तब भी मैं कहता हूँ 1 घंटा आपने दे दिया बहुत है, ठीक है। तब भी 1 घंटा डेली दे दिया बहुत है, 1 घंटा दे सकते हो आप। ये अपनी साधना में भी देते हो ना, तो इससे ये भी तो साधना ही है। व्हाट इज दिस? दिस इज साधना ओनली, राइट। ये साधना है और इसमें सिद्धि आ जाती है। जब आप इसको साध लोगे तो सिद्धि आ जाएगी, तो जो बोलोगे वो अपने आप सही हो जाएगा। ये भी साधना ही है। और नेक्स्ट किसका क्वेश्चन? तो पंडित जी, कुंडली ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष सेम थिंग और डिफरेंट थिंग्स? नहीं, कुंडली तो ऐसे कोई ज्योतिष नहीं। कुंडली कोई, आई थिंक आप वैदिक ज्योतिष बोलते हैं बेसिक। कुंडली ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष सेम हो, तो नाम ऐसे बना दिए। वैदिक देखिए 2 टर्म, 3-4 तरह के डिविजन्स हैं। एक वैदिक ज्योतिष है, एक जैमिनी है, फिर नाड़ी आ जाता है। नाड़ी में भी एक आ जाता है पत्तों वाला, जो लिखा हुआ पास्ट के बारे में बताता है, और एक आता है जो मैं करता हूँ नक्षत्र वाला। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो है नक्षत्र वाला होता है। ये भृगु नंदी नाड़ी का ही लीनियज है, बट नक्षत्र इज नथिंग इज मोर परफेक्ट देन दिस। एक भृगु नंदी नाड़ी भी अलग से होता है, पर उसमें भी 2 डिविएशंस हैं। तो नक्षत्र नाड़ी जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने देखो इसकी एक्यूरेसी इतने साल देखी है, इतने सालों देखी है, इतने लाखों चार्ट में देखा है, इतने हजारों चार्ट में देखा है,
तो मुझे पता है यार ये है ना, नथिंग बीट्स दिस। हाँ, कई बार लोगों के टाइम में गड़बड़ होता है, तो आई टेल यू कि टाइम कैसे करेक्ट करना है। भाई कोई 5:15 की जगह 5:30 पैदा हुआ, 5:30 की जगह कुछ और पैदा हुआ है, तो वो करेक्ट कैसे करना है बेस्ड ऑन द इवेंट्स। तो वो भी आप टाइम करेक्शन करना सीखते हैं, जो कि अच्छे एस्ट्रोलजर्स को नहीं आता टाइम करेक्शन करना। ठीक है, तो सब आप सीखते हैं, यू लर्न एवरीथिंग। बस क्लास आपको करनी है 2 घंटे पूरी कमिटमेंट के साथ, बस दैट इज ऑल आई नीड फ्रॉम यू, कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट। जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। I just wanted to say और that I have joined and I'm looking forward to starting the classes. wow, amazing, amazing. I'm so happy to have you, sir. Very good, amazing, very good. Very Yes, good. and actually from your talk today, it seems that I may be the oldest person that you are going to teach. So what's your age, if may I ask, sir? I am 69. Wow, amazing. Good, good. Yes, you will learn. You'll get special attention. Don't worry. Thank you very nice. much. Very good, very good. No, no, everybody can learn. I tell you now, I can teach people till 80. So no problem. You must have a courage to, just do that. So I'm congratulate you that you took that step and have that courage to learn this. And see, I tell you a very important thing. बहुत important thing. देखो, लाइफ तो जाने वाली है. आज है, अभी है, कल नहीं है. ठीक है, अभी है, सांस निकल गई, चले गए, छुट्टी। सब घर, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी जितना कमाया था सब यहीं कहीं, कुछ नहीं जाने वाला आपके साथ। आपका नाम भी लोग 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में भूल जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। जाएगा क्या? 2 चीजें जाएंगी आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। क्या जाएगा? एक तो गुरु की भक्ति, जो आपका डिवोशन है, क्योंकि जहां अगर गुरु भक्त हो ना, तो ऐसे घर में पैदा होगे जहां पर भक्ति होती है, जहां पर सिनेरियो है। अगर आप गुरु भक्त हो तो ऐसी जगह ही पैदा होगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई लाइफ तो जाने वाली है, किसी भी क्षण जा सकती है। तो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट जो सूत्र है ना, वो बहुत ही एप्लीकेबल है कि इस क्षण में जियो, कभी भी जा सकती है। और भक्त तो वैसे भी हर रोज मरता है। अगर भक्त को पढ़ो ना, भक्त कैसा होता है, तो हर रोज जीता है, हर रोज मरता है। पर क्या मरने के बाद जाएगा क्या आपके साथ? कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। जितना कमाए यहाँ पर ना, जितना रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, सब शरीर भी नहीं जाने वाला। ये सब आपको पता है। क्या जाएगा आपके साथ ये नहीं पता आपको। एक तो गुरु भक्ति जाएगी, भक्ति डिवोशन जाएगी। तो अगर गुरु भक्त होगे तो उसी घर में, उसी सराउंडिंग में, उसी एनवायरमेंट में पैदा होगे जहां पर भक्ति होती है। दूसरा क्या जाएगा? एनी नॉलेज ऑफ वेदांग यू हैव लर्न, जो भी आपने लर्न किया है। और ज्योतिष इज वेदांग। अगर वंस एस्ट्रोलॉजर इज ऑलवेज एन एस्ट्रोलॉजर, दैट इज व्हाट माय कोट इज। तो एक बार सीख लिया ना आपने, तो आप जन्मों जन्मों तक हो। ये ज्ञान मुझे बाद में हुआ, बाद में पता चला मैं एस्ट्रोलॉजर क्यों बना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये आज का कनेक्शन नहीं है, बहुत पुराना कनेक्शन है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो आप एक ऐसी विद्या ले रहे हो और आप ऐसे तुक्के से नहीं आ गए स्टॉक में, और आपने तुक्के से वो नहीं कर लिया है। तो अगर मन में कहीं संशय है ना, तो उसको दूर कर लीजिए और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि ये इस जन्म का नहीं है, ये तो कई जन्मों का चीज है। मेरे को तो ऐसा भान हुआ है, नॉलेज हुआ है। और आप देखोगे जो भी वेदांग पढ़ता है, चाहे वेदों का पढ़ता है, आपने देखा होगा कई लोग, छोटे बच्चे भी होते हैं, वो रिसाइट करते हैं मंत्रास और चीजें। क्यों? कि वो नॉलेज कहीं ना कहीं पास ऑन होता है। बाकी कुछ भी पास ऑन नहीं होता आपके पास, वो चित्त में रहता है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा, वंस एन एस्ट्रोलॉजर इज ऑलवेज एन एस्ट्रोलॉजर। एटलीस्ट वो शिक्षा, वो एनर्जी आपके साथ रहती है। फिर टाइम आएगा तब उजागर हो जाती है। जैसे मेरा टाइम कब आया? टाइम अभी आया, काफी साल बाद। हम कर रहे थे, शुरू से प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करते रहते थे हमेशा। तो आप इसको कर लीजिए, ये चीजें जो आपके साथ जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला, तो भक्ति और किसी भी वेदांग का नॉलेज ये आपके साथ जाता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो जरूर करिए। और कोई बात, कोई क्वेश्चन? पंडित जी, एक क्वेश्चन था। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स की कुंडली नहीं देखते हैं, तो ये बात किस हद तक मतलब फॉलो करनी चाहिए? नहीं, ठीक है। देखो क्या है कि
अगर आपको दिखा नहीं है, कुछ क्रिटिकल इशू है, तो बेटर है आप जिनसे मतलब सपोज मेरे से सीखा है या कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको दिखा लीजिए। क्यों? क्योंकि ना उसमें बायस हो जाते हैं। सो अपनी फैमिली की एस्ट्रोलॉजी आइडली खुद नहीं करनी चाहिए। आप जान सकते हो, देख सकते हो, पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं करनी चाहिए, वो दुख से पूछ लेनी चाहिए। बट जैसे मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मेरे को पूछना होता है मालिक से पूछता हूँ, करना क्या है, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी दिखा रहा हो, ठीक है, तो या फैमिली का कुछ पूछना है तो मालिक से पूछा, या जो भी है, मतलब जहाँ भी, तो ऐसे पर्सन से जिसके आपको ट्रस्ट और विश्वास हो, ठीक है, क्योंकि बायसनेस बहुत रोल प्ले करती है। बायसनेस में आप सही डिसीजन ले, आप अपने बच्चे का ही चार्ट ले देख रहे हो तो आप एक हद तक शायद देख पाओ सही, पर जहाँ इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वहाँ बायस हो जाओगे आप। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी बायसलेस होनी चाहिए। तो भाई आपको करना है तो आप ऑब्वियसली यू कैन रीच मी, देखा जा सकता है। ऑब्वियसली आपको चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों है, किधर है, क्या है, पर क्या मन मानता नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा, या वॉट एवर, सब पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इज देयर। तो इसलिए वो कहा गया है कि अपने पे ज्यादा फोकस, और एस्ट्रोलॉजर को तो अपना चार्ट देखना ही नहीं चाहिए। एक आध बार देख ले ठीक है, मेरे को तो बहुत, मतलब मेरे को तो आज भी याद नहीं मेरे प्लैनेट्स कहाँ किधर बैठे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक आध कुछ याद होगा, नहीं याद रखता, कोई फायदा नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। मतलब मेरे को तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पूछते थे, अरे यार इधर क्या है, इधर क्या है, देखा ही नहीं, चार्ट देखना क्यों है। मतलब इट्स ऑलरेडी कि मेरे को ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी भान होती थी, पता होता था, तो देखना ही क्यों, कोई देखने की जरूरत ही नहीं कुछ। तो खैर वो इंट्यूशन भी, एस्ट्रोलॉजी करते करते आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एंड दैट आल्सो आई टीच बेसिकली इन द एस्ट्रोलॉजी कोर्स। यू नो आप इंट्यूशन का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इतनी प्रिडिक्शन जो मंडेन प्रिडिक्शन जो मैं करता हूँ, यू नो अबाउट द कंट्री, अबाउट द इलेक्शंस, अबाउट एनी पर्सन, अबाउट द हेल्थ वेल्थ वॉट एवर, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो सब मैं बताता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं सब आपको सिखा देता हूँ, ताकि आप भी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। And all this is done in 6 months, भैया? हाँ, ये बड़ा सरप्राइज लगता है ना कि ऑल दिस इज डन इन 6 मंथ्स, ऐसे ही है, ऑल दिस इज डन इन 6 मंथ्स। तो ये मैजिक है एक्चुअली, ठीक है, और उनका मैजिक है, मेरा मैजिक नहीं है। हाँ, And what 6 if we मंथ्स, don't do बल्कि it? आप 4 मंथ्स में ही सीख लेते हैं। देखो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी यही है कि दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और 4 महीने में आपको आ जाता है, 3 से 4 महीने में सब आ जाता है, फिर तो 1-2 महीने प्रैक्टिस करती है। What if we don't learn? What if we are slow? डजंट मैटर, प्रैक्टिस होता है ना। अगर आप स्लो हैं तो प्रैक्टिस होता है। मैं तो बोलता हूँ ना, मेरे पास जो भी कोई डाउट है आपको क्लास में, सो मेनी पीपल डोंट आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, मैं कहता हूँ भाई मेरे को 1-to-1 पिंग कर लो, खत्म हो गई बात। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं अलग से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेके आपको समझा दूंगा, कहानी खत्म हो गई। और फिर हमारे प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं, ठीक है। तो कितना भी स्लो हो आपको आ ही जाएगा। अगर आपको काउंटिंग आती है 1 से लेकर 10 तक तो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर काउंटिंग नहीं आती तो मुश्किल होगा। काउंटिंग आती है बताइए 1 से 10? आती है काउंटिंग? आती है। That बस फिर इतना everyone कॉन्फिडेंस knows. रखिए कि मैं सिखा But your दूंगा। house and your guna, whatever you were saying, I know Doesn't nothing matter, I about it. don't do that. I don't do that ना, ये तो कह रहा हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी But you were डिफरेंट saying होती है। house, second house, 8th house, 11th house, whatever house. वो सब I बता have दूंगा, no वो सब idea. Absolutely, you have no idea. That is the, you are the most eligible student. वो सिखाता हूँ ना मैं, वो सिखाता हूँ सेकंड हाउस किसको बोलते हैं, फर्स्ट हाउस किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, वो सब सिखाता हूँ मैं। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है ना तो यू आर द परफेक्ट स्टूडेंट, बट इंटरेस्ट है, कमिटमेंट है कि मुझे सीखना है, बस ये मन में होना चाहिए, मुझे सीखना है, ठीक है। और बस जैसा बताऊं वैसा चलते रहेगा। गारंटी है कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका टेस्टिमोनियल मैं लूंगा, आप बोलेंगे वाह मेरे को तो कुछ नहीं आता था, और आगे कितने सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं। आप देखिए हमारे, अभी भेजेंगे आपको ग्रुप में, अगर आप हमारे वनडेज वाले ग्रुप में एडेड, आप प्रीति जी, प्रभाकर जी, आपने देखा होगा राइट, कितने सारे टेस्टिमोनियल सुने, उनको कुछ नहीं आता, Yes, कुछ lot of भी नहीं आता था, students, 0/0। lot of students shared. तो वो सिखाते हैं आपको, उसकी चिंता मत करिए। आप कितने भी स्लो हो, आपका मन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। आपका मन है ना सीखने को, मेरे को पूछोगे ना आप क्वेश्चन कि संजीव जी हाउस का मतलब समझ में नहीं है, ये हाउस क्या है, मैं बताऊंगा आपको। पंडित जी नहीं समझ में आई, मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा। और बोलिए। Pandit ji, I have one question, sir. डोंट वरी,
So you I'm get all starting this a. thing and very, yeah, Naveed ji, 1 second. So you all get very, very slowly and gradually you learn. It is not that कि एक ही दिन में सारा knowledge डाला जा रहा है. इसका मतलब क्या है, कैसे हैं, फिर क्विज होता है, सेशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं. तो जब तक आपको याद नहीं होता, जब तक आई डोंट सी कि ऑल बैच इन द सेम पेज, आई डोंट गो अहेड. भाई क्यों नहीं याद हो रहा है, क्या नहीं है, चलिए करते हैं वापस, अभी करते हैं. ठीक है, अलग से करते हैं. तो ये मेरा फोकस है. मैंने कहा ना, मेरा फोकस है लोगों को एस्ट्रोलॉजर बनाना. मेरा पर्पस ये नहीं कि मैंने ज्ञान दिया और गायब हो गया. बहुत फर्क है इसमें. अगर आपको कुछ नई चीज आ रही तो आप मेरे से पूछेंगे ना कि नहीं आ रहा, मैं आपको टाइम दूंगा अलग से. तो क्या बड़ी बात है. And someone asked you a question about network. Now, what is a network needed for? नहीं, नेटवर्क कुछ नहीं. देखिए क्या होता है कि सपोज करो यू नो you want to be a professional astrologer, then obviously you want to known in your circle. ठीक है, कि भाई कैसे बताएं. तो उसकी तैयारी हम 3 महीने के बाद से शुरू कर देते हैं. भाई आप अपने आप को बताना शुरू कर देते हो, लोग आपके पास आना शुरू कर देते हैं. बट आप एज ए सैंपल, एज ए टेस्ट आप डिस्कस करते हो चीजें, क्लास में डिस्कस करते हो, चार्ट डिस्कस करते हो, and then you do it basically, you tell them or whatever is a plus minus is there, you tell them. तो ये देखिए, astrology is not something which you promote in the Insta or Facebook or something like. Astrology is a game of word of mouth. अगर आपने किसी का अच्छा किया है, उसको फायदा हुआ है, तो वो अच्छा होगा. मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले फैमिली वाले हंसते थे. They used to laugh at them. Oh, ये एस्ट्रोलॉजी करे, इसको आएगा एस्ट्रोलॉजी, ये ऐसे करके मजाक उड़ा देते. ठीक है, तो पहले महीने मजाक उड़ाया, भाई दूसरे तीसरे महीने उसे कुछ सीखा, अच्छा देख के बताता हूँ, बताया. तो चौथे महीने सब, तीसरे महीने, थर्ड मंथ सबकी चुप, एकदम चुप. अभी ये तो जो बोलता है वो सही हो रहा है, ये तो सब सही बताया जाता है. ऐसे एस्टोनिश्ड, चॉक्ड. आप मेरे इंस्टा पे संजीवन स्कोर एस्ट्रो में एक बंदे का, अभी बहुत सारे मैं आजकल मैं अपलोड करूंगा, आप देखिएगा लोगों के ऐसे ऐसे फीडबैक है कि पहले फैमिली वाले हंसते थे, फिर खुद ही आने लग गए, फिर दोस्त आने लग गए. तो क्या वर्ड ऑफ माउथ ही फैलता है. जब आप किसी का एक बताते हो फिर आता है. 6 महीने तो लंबा टाइम होता है ना, और एक एक टॉपिक पे आप एक एक भी किसी को बताते हो तो बोलता अरे अच्छा ऐसा था. और मैं बताता हूँ पहले पास्ट को कैसे चेक करना है. So we क्योंकि don't have पास्ट to आप चेक bring कराएंगे some तभी आप 10, 20 people to do this. We don't have to do that kind of, it's not a marketing kind of thing, right? No. नहीं, मार्केटिंग किसकी करनी है. मार्केटिंग किसकी We करनी, don't मेरी कर have to दीजिए, go कर and और get किसी की some नहीं करनी. 20 people to do the horoscope for, or not that pressure. Okay. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. देखो कहने का Okay. मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली में बताओगे ना, तब तो लोग आएंगे आपके पास क्वेश्चन करने. ये मतलब है. ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप अपनी, जब आप सीख जाते हो एक डिसेंट लेवल पे, पहले आप क्लास से प्रैक्टिस करते हो. फिर बोलता हूँ अच्छा हॉरोस्कोप लाइए, किस किस के, जिसका आपको, भाई आपको कोई बोलेगा तो बोलेगा ना हाँ मेरे को जॉब का प्रॉब्लम, मेरे को इसका प्रॉब्लम, लाइए क्लास में हम डिस्कस करते हैं हॉरोस्कोप. ठीक है, प्रैक्टिस करते. तो ऐसे करते. मार्केटिंग आपको किसी की नहीं करनी है तो मेरी कर सकते हैं, और किसी की नहीं करनी. चलिए आगे बताइए. और किसी, नवीन जी कुछ बोल रहे थे प्लीज. मैं ही बोल रहा था कि so I have a course starting tomorrow, so I won't be able to attend the first session. वेरी गुड. अच्छा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो कर लीजिएगा. फर्स्ट सेशन में तो बहुत कुछ नहीं होगा अभी, मतलब बहुत स्लो. हम शुरू के 1-2 सेशंस हमारे थोड़े स्लो ही होते हैं. फर्स्ट में तो यूजुअली इनिशिएशन वगैरह होता है. बट अगर आप किसी रीजन से नहीं कर पाते, मैं कहूँगा कर लीजिएगा. अगर किसी रीजन से नहीं तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. sure, मैं Monday से I बहुत will be easy back है. actually. Yeah. हाँ, यू कैन वॉच द वीडियो. और वीडियो हमारा एक दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर अगले दिन तक अपलोड हो जाता है. विल गिव यू द G ड्राइव एक्सेस एंड एवरीथिंग. अपने ईमेल जो है ना वो आपके सबके हमारे पास हैं. तो कल वाला इतना वो नहीं है, पर कल इनिशिएशन होगा बेसिकली. ठीक है, हम बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं. एंड आई ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड है फिर उनको हम बताएंगे, अलग से क्लास लेंगे. कल तो बेसिकली इंट्रो क्लास है, सब क्लासेस हैं, तो डोंट वरी. Pandit ji, I have 2 questions. बोलिए अशोक. Thank you. तो पहला ये है कि, and this is applies for the second one as well, but how do I make sure that I don't
consider only astrology as something as a way of life. And second question is that how do I make sure that I am like differentiating between prarabdha and purusarth, right? There is destiny that comes from the horoscope, and then there is our effort. Gurudev says, right, that's it's both the things. So the way I came into, sorry, go ahead, Panditji. No, very good question. Please complete your question. No, मेरा ये question था कि just I have been getting the help from astrologer for many years, and then I was always interested in learning more. And in last few weeks, the way it came to me is that, okay, I want to know more about my tendencies, my sanskara, why, where is this, why this birth and life and death, and what's causing me to come back to samsara over and over again. There must be a reason for me, to associate with others and so many things. So, I don't want to make it as a, that was my quest that drove me to this. So how do I balance it in real life? I'm still in the present moment. I'm still doing my things. I'm not, blindly only saying that, oh, this is only because of this, right? So, yeah. Very good question. बहुत अच्छा question है, बहुत deep question है. So I would say कि देखिए, astrology is not everything. I would say this is a tool. I said the earlier also, जैसे हम financial tool और इतने सारे tool use करते हैं, computer use करते हैं, the astrology is also a tool. It will guide you. It will give you a guidance. But क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमारे हाथ, ठीक है? पर क्या होगा? I said one word. If you have heard, we are karma readers, time readers. तो उसमें जो लिखा हुआ है ना, अगर आपका डे टाइम प्लेस सही है, आपके इवेंट सब चीजें सही मैच कर रही हैं, तो आगे एग्जैक्टली वैसे ही होता है. बट जो आपने बोला, बात करा पुरुषार्थ और कर्मा की, तो डेफिनेटली आपके प्रारब्ध में कुछ लिखा हुआ है, वो आपके चार्ट में लिखा हुआ है. पर आपका प्रेजेंट कर्मा है, उससे आप कैसे चेंज कर सकते हैं. सी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन. एग्री विद दैट, राइट? ये हम लोग को मालूम है. तो चार्ट में भी वो एनर्जी और वाइब्रेशन ही होता है. अब उसको कैसे चैनलाइज करें? हम योगा साधना से करें, ध्यान से करें, किसी और एक्टिविटी से करें, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो एनर्जी चीज, जब इवेंट जो लिखी हुई है ना, वो होगी, वो 99 नहीं 100% होती है इवेंट. हमने तो ये देखा है इतने साल में. बट इवेंट कैसे, जब अगर हम सही चीज, इफ वी डू द राइटफुल कर्मा, राइटफुल थिंग्स, देन इट चेंजेस एज वेल. सी, 12th हाउस इज हॉस्पिटल एंड 12th हाउस इज आश्रम. कई लोग का बहुत बड़ा केस हुआ कि भाई हमारा तो ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, ये होगा. मैं कहा आश्रम चले जाओ. 15 दिन आश्रम गए, 15 दिन बाद आश्रम से आए, वो सर्जरी की जरूरत ही नहीं रही. सोचिए, ये 12वां हर वो होता है. तो ऐसे एनर्जी. सो आई यूजुअली से 6, 8 and 12. 6 इज डिजीज, डेथ, लिटिगेशन. 6 इज सेवा. सेवा करोगे तो डिजीज, डेथ, लिटिगेशन कम हो जाएगा. 8 इज ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्च्यून. अगर ये लाइफ में है, पद्म साधना, प्राणायाम करो, देखो कम हो जाएगा. कैसे कम नहीं होता है? बिल्कुल कम होता है. ऑब्स्टिकल है, हर काम में काम नहीं बनते. पद्म साधना स्टार्ट करो ना, कैसे नहीं होगा. 12th हाउस इज लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो. पैसा खर्च है, बरकत नहीं है, दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है घर में, बहुत नहीं हो रहा. एडवांस कोर्स करना शुरू कर दो. I tell you, magic happens. इतने सारे across the world से फीडबैक है ना, इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतनी सारी, मतलब मेरे को 6 घंटे लग जाएंगे अगर मैं बनाने लग जाऊँ. इतनी सारी स्टोरीज हैं. So you'll be teaching us सिर्फ remedy. उस एनर्जी को रिकग्नाइज करते हैं और उसको बता देते हैं उपाय चैनलाइज करने का, कि ये एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है. और आदमी बोलता नहीं, मैं बिलीव नहीं करता. मत करो भाई, वो देख लेगा. वो जब खुद देख लेता है तो उसको समझ में आता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, बेटर मैं चला जाऊं जो इन्होंने बोला था. तो बहुत होता है ऐसा, तो है ना. और बाकी हम पास्ट के जो भी कोई भी काम तुक्के से नहीं होते हैं. यहाँ तो टाइमलाइन से होते हैं. एवरीथिंग इज प्लान्ड, आई वुड से. सो पास्ट में भी देख लेते हैं, अच्छा इस टाइमलाइन में, इस ग्रह में, इसी प्रॉब्लम में ये हुआ था ना. हाँ हुआ था जी. अच्छा अभी ये ऐसी सिचुएशंस वापस आ रही, इसको कैसे ठीक करना है, इसको ठीक. तो कर्म तो हमारे हाथ में ही है, प्रारब्ध भी है. प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है. बट जो हम अपने राइटफुल कर्मा करें, चीजें करें, तो उससे हम काफी चीजें चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. तो आप किस लिए पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, वो ऑलरेडी चार्ट में लिखा हुआ है. अगर आप उस एनर्जी में रहेंगे तो मिजरी नहीं रहेगी लाइफ में. ये बात पक्की है. आप उस चीज को पूरा करते रहेंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं. देखो ये तो बहुत गूढ़ क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वो बताएगा भी नहीं. जैसे कहते हैं ना, हु एम आई, व्हाई आई एम बोर्न. तो ये बी विद दैट क्वेश्चन. बट यू विल सी द एनर्जी, हाउ इज द टाइमलाइन, व्हाट इट इंडिकेट्स, एंड देन इफ यू डू दैट इट विल हेल्प. ठीक है जी. तो आपको बहुत चीजें पता लग जाती है और उसके हिसाब से आप कर्मा करते हैं तो कई चीजों को आप राइटफुल डायरेक्शन भी दे देते हैं. ठीक है जी. होप आई एम एबल टू आंसर.
क्वेश्चन? हाँ पंडित जी, बहुत अच्छी तरह से. इफ आई कैन जस्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन. आई थिंक आपने बहुत अच्छा आंसर, बाय द वे. आई रियली appreciated it. It's still you know, I'm contemplating on that. हाँ Second thing देखो, is the क्लास में जब देखो डिस्कशन होती है ना, जब एरियस इवेंट्स आते हैं, जब हम डीप में जाते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं, देखो इस आदमी में ये हुआ, इसकी लाइफ में ये हुआ, क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ. तो वो जब डीप में जाते हो ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 10, 20, 50, 100, तो समझ में आ जाता है कि यार हो क्या रहा है, जादू क्या है, ये मैजिक क्या है, या ये चक्कर क्या है. तो डीप में जाने पे समझ में आता है ये सब चीजें. जी can I बोलिए. so second thing आपने बोला, but how do we make sure that we can you know, we can detach from the other people, like, you know, like the family members, they kind of believe in it but they don't. I mean, they are totally like in karma yoga, right? That's So okay. how do we again नहीं, जिसको make जहाँ sure? बिलीव करने दीजिए ना. आपको किसी का बिलीव चेंज करने की जरूरत नहीं. जिनको जो बिलीव करने दीजिए. क्या है कि कर्म योगा तो है ही, भक्ति योगा, कर्म योगा, ये सब चीजें तो है ही. बट क्या है कि कर्म योगा, जब आप एक अंदर चीज, आपको एक साइंस आ जाती है ना, तो आपको समझ में आता है ये कर्म योगा में क्यों बिलीव करता है, क्योंकि वो भी उसके चार्ट में लिखा हुआ है. आप समझिए इस बात. हाँ. समझ रहे ना. तो वो सब चीजें आ जाती हैं. और फिर लाइफ में आप देखते हो, अच्छा इसकी शादी हुई थी, इसकी शादी में ऐसा रहा, इसकी शादी इस टाइम में हुई, अच्छा इसको ये लाइफ में ये बीमार हो गया, इस टाइम में ये बीमार हुआ, इस टाइम में इसको जॉब मिली. सब कुछ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. और आप तो डेट बाय डेट करते हो, आप डेट बाय डेट बताते हो कि इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये, उस टाइम. और आदमी खुद ही शौक रहता है, ये कैसे, इसको कैसे पता भाई. तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का तो जादू है, ऐसा इस तरह से होता है कि डेट बाय डेट चीजें मैच करती हैं. ठीक है. Right. तो फिर समझ में आता है कि यार मेरे हाथ में क्या है. और यू नो, तो बात ये है कि रियलिटी खुल जाती है लाइफ में कि यू आर जस्ट अ पपेट. ठीक है, और कुछ नहीं है. हाँ, उनकी कृपा से, उनकी दया से आप स्ट्रिंग को ढीला कर सकते हैं. आपके पास उतनी रस्सी है जितनी गाय के गले में होती है. थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, बाकी तो फिक्स है. ये तो आप समझ में आएगा. और बस गुरु की देव की दया से, मालिक की दया से ही आप कुछ कुछ कर सकते हैं रस्सी से बाहर. अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते. ये तो इतने लाखों चार्ट देख लिया, अब तो अनुभव हो ही गया, समझ में आ गया. मतलब हर चीज प्रिसाइसली ठाक 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 कैसे होती है. पंडित जी, इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है. बोलिए. आपने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कैसे डिस्कवर किया या चूज किया, जो कि पॉपुलर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है? बहुत सारी हैं. देखिए बहुत सारी. देखो बचपन से एस्ट्रोलॉजी तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेडिक्शन की थी व्हेन आई वाज एट एज मे बी 8 और 9 समथिंग लाइक दैट. और भी शायद छोटा ही था. पिताजी के बड़े बगल में खड़े होकर देखते रहते थे. तो एस्ट्रोलॉजी की तो इतनी सारी बुक्स होती थी, सब पढ़ते थे, सब करते थे. और लोगों का देखा, हाथ देखा, चेहरा देखा, बताए थे, जो बताते थे वो सत्य होता था. तो ये तो गुरु की कृपा ही है. फिर जब मालिक ने बोला कि पढ़ाओ एस्ट्रोलॉजी, हम कहीं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ा, खुद को आता नहीं, पढ़ाए कहाँ से. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि पढ़ाना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, और प्रिडिक्शन करना एक डिफरेंट गेम. ठीक है. प्रिडिक्शन आप कर सकते हो. प्रिडिक्शन इज आई थिंक मच इजियर. मेरे को जो समझ में आता, प्रिडिक्शन बहुत इजी. अगर आप अलाइंड हो ना, तो प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है. अब थोड़ा सा भी विद्या आता है. पर पढ़ाना इज अ डिफिकल्ट जॉब. तो मैंने फिर कहा पढ़ाना है तो फिर भाई पढ़ना पड़ेगा. तो पढ़ाना एक टेक्निक अलग है. तो भारतीय विद्या भवन से पढ़ा, मैंने कोर्स किया, 2 साल पढ़ा, खूब पढ़ा. खूब पढ़ने के बाद समझ में आया कि यार जितना मैं प्रेडिक्शन 2 साल पहले करता था, उतना प्रेडिक्शन अभी करता. ठीक है. तो मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात नहीं बनी. ठीक है. सीखा उसमें बहुत सारी चीजें. और मेरे ख्याल से 200 लोगों का बैच होगा, उसमें शायद बहुत से आज की डेट में मेरे ख्याल से हो सकता है 2-4 लोग ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और लोग नहीं. क्योंकि उसमें ना एक तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, प्रिसाइज आती नहीं. फिर कोई इवेंट गलत हो जाता है, आपने बताया, तो क्या डिमोटिवेशन बहुत हो जाता है. आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, छोड़ देता है, अरे नहीं मेरा बस का ही नहीं है, 2, 4, 10 गलत हो गई. और यहाँ पर क्या, ठीक है 1-2 गलत हो सकती है आदमी से, बट यू नो ऐसा नहीं हो कि सारी गलत है. मतलब यू गेट टू नो कि हाँ यार ये तो सत्य हो रहा है, सही हो रहा है. तो अगर आप बात कीजिए, देखो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ज्ञान, ये थोड़ी, ये तो शास्त्रों में बहुत जगह ज्ञान है. ज्ञान ये आज ऐसा थोड़ी कि ज्ञान नहीं है. कोई मैं थोड़ी इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बना रहा हूँ, ये तो ऋषियों ने बनाया हुआ है. बट अगर तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज किए, कई सारे कोर्सेज किए. बट अगर मैं असलियत बताऊं आपको कि एस्ट्रोलॉजी कैसे
सीखी, तो ये हमारे शास्त्रों में कहा गया ना, क्वेश्चन एंड आंसर से आप सीखते हैं। ठीक है, गीता भी क्या बनी, क्वेश्चन एंड आंसर से। बाकी सारे जितने भी शास्त्र, अष्टवक्र, गीता या जितने भी हैं, सब कैसे, क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये गुरुदेव की कृपा और क्वेश्चन आंसर से ही मैं सीखा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं, Thank you, देखो thank you. मालिक के पास लोग जाते हैं, तो कलाकार जाता है तो क्या अपनी कला बोलते हैं, हाँ कला सिखाओ, कला दिखाओ। कोई और जाता है तो बोलता है अच्छा ये दिखाओ। क्या मतलब, उनका मतलब ये नहीं होता कि उनको कुछ सीखना है या कुछ जाना, उनका मतलब ये होता है कि आपको आपकी उस क्वालिटी को उजागर करना है। समझ रहे मेरी बात? उस क्वालिटी को मालिक गुरु उजागर करते हैं। तो जितना मैं क्वेश्चन आंसर से सीखा हूं ना, उतना मैं किसी से नहीं सीखा। क्योंकि मैं जब भी मालिक के पास गया, उन्होंने कुछ पूछा और वो वही पूछते थे जो मुझे पता नहीं है। ये ब्यूटी देखिए, वो वही पूछते थे जो मुझे पता नहीं है। तो मेरे को तो इसका आंसर तो मुझे पता नहीं। फिर 2 दिन पूरा जम लगाता था, पूरा दिमाग लगाता था, पूछता था, फिर आंसर मिलते थे, फिर आंसर देता था। ठीक है, तो क्या हुआ, उस क्वेश्चन आंसर से जितना सीखा उसके किसी चीज से नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसका, तो वो चाहते थे मैं सीखूं। इसका मतलब ये नहीं है कोई सोचे अरे आप तो उनको बता रहे हैं, आप तो गुरुदेव के एस्ट्रोलॉजर हैं, ये अरे बेवकूफ, उनको मालिक को कौन बताएगा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको कौन क्या बताएगा। ठीक है, उनको बताने का मतलब नहीं है, उनको तो सब पता रहता है। वो तो आपकी कोई क्वालिटी, आपकी कोई चीज निखारना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं हाँ भाई ये बताओ, हाँ भाई ये बताओ। तो जैसे होता था, वैसे जैसे राजा महाराजाओं के उसमें होते थे, 10 मंत्री होते थे, तो बताया, पूछा जाता हाँ भाई ये बताओ, तो सब अपना अपना विचार विमर्श करते थे, बताते थे। पर ये कृपा ये रही कि जो मैं बताता था वो 99 100% एक्यूरेट होता था। अगर 5 लोग बैठे हैं, कोई विद्वान लोग बैठे हैं, उसमें से अगर 5वां मैं हूँ और 5वां मैं अगर बोलता था एकदम, मतलब ऐसे कई इंसिडेंट हुए एकदम 180 डिग्री अपोजिट, तो पहली बात तो वो बोलने का करेज भी होना चाहिए आपके पास। तो बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, वो बोलने का करेज भी होना चाहिए आपके पास कि भाई 4 विद्वान जो है कुछ और बोल रहे हैं और आप एकदम 180 360 डिग्री उल्टा बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल। तो हम तो हाथ जोड़ के बोल देते थे जी हमें तो ये दिखता है। ठीक है, और जब टाइम आता तो पता चलता था जो हमने बोला वही सत्य हुआ। तो ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, समझना, चीजों को एक्सप्लोर करते थे। तो चीजें सीखी किससे, गुरु से सीखी। अगर मैं देखूं कि अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी किसने सिखाई, क्या सिखाई, तो मैं तो बोलूंगा भाई मालिक नहीं सिखाई। ठीक है, बाकी तो ज्ञान देखो यूट्यूब में और बुक्स में और पता नहीं कहाँ का बड़ा हुआ है, उससे नहीं सीखते आप, उससे नहीं सीख सकते। आप सीखते हो सही टीचर से, जिसको ऑलरेडी वो ज्ञान है, वही सिखा सकता है। तो मालिक को तो पूरे पूरे जिसे कहते हैं ना, वो तो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट से एक ड्रॉप का भी ड्रॉप का भी ड्रॉप का भी ड्रॉप जिसे कहते हैं ना, वो हमको मिल गया तो हम तर गए, है ना। तो सीखा इस तरह से, अगर मैं कहूँ तो रियलिटी ये है। बाकी तो कहानियां बनाते रहो जी, यहाँ से पढ़ा, वहां से पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, इस किताब से पढ़ा, इस एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे टीचर्स हुए जिनसे सीखा। पर जो प्रिसीजन आया ना, वो इस चीज से आया। नहीं तो देखो, प्रिडिक्शन में 60-65% से वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऊपर कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है ना, तो वो नाड़ी यूज कर रहा है फॉर श्योर। आपको बताएगा नहीं भले ही, पर नाड़ी यूज करेगा। जैसे हमने बहुत देखा, मैं बहुत साल पहले हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो वो बोलते थे कुछ और थे और देखते कुछ और थे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रचलन चल गया ना वैदिक 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 करके। तो पर नाड़ी हमने देखा यार ये तो बहुत ही प्रिसाइज चीज है, बहुत ही अद्भुत विद्या है। तो हमने सोचा इसको बताया जाए, इसको पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तो हमारा तो मिशन यही है, पूरी दुनिया में वन होम एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर। तो भाई इसको सीखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको 2-4 महीने में ही क्या चीज है। I have a question. I have a question. Will you be teaching us the remedies in this 6 months? Obviously, absolutely. Without remedies, there is no astrology. Okay, because otherwise it's frightening to do it for your family. नहीं, फैमिली में इतना फ्राइटनिंग कुछ नहीं है। जो चीज है वो है, बल्कि ये आपको एनलाइटन कर देती है यार, ये ऐसी चीज होने वाली है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको ऐसे कर लीजिए कि जो चीजें होनी है वो तो होनी है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है उसमें। बल्कि आपको पता लग जाता है तो आप उसका रेमेडी कर सकते हैं। So we learned that, right? Because remedy, without the देखिए, remedy, it's fearful, I feel, to know something fear but you की don't बात need नहीं to है। know. विदाउट रेमेडी देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी। Okay, all right. आप तो फियर की बात कर, में एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मालिक ने एक बार बोला था कि
भाई ज्योतिष बिना रेमेडी के क्या है? कुछ भी नहीं। तो रेमेडी तो होनी चाहिए, तो रेमेडीज आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और बोलिए किसका क्वेश्चन है? बहुत सारे चैट पे भी क्वेश्चन आए हैं, देख ही लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रभाकर जी, One कुछ मैंने question, नहीं आंसर किया हो तो। one question, Pandit ji. Like if somebody wants to learn कि वो सीखना ही इसीलिए चाह रहे हो कि टाइम टू टाइम अपना चार्ट भी देख सकते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम आप आया तो देखो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है, बट जहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, तो अगर आप उस तरह से कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। कई बार बायसनेस आ जाती है। ठीक है, अभी Okay. काफी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, हम लोग जो है देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डेफिनेटली अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट को रीच आउट करना चाहिए। Okay, but like biasness आप कैसे किस टर्म से कह रहे हैं? जैसे बायसनेस कुछ नहीं दूर कर सकते आप। भाई मैं चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ही जीते, ठीक है, मैच में, तो बायसनेस आ गई ना। अब जब जी, तक मैं पाकिस्तान दिख रहा है मेरे को जीतते हुए, पर मैंने लिख दिया इंडिया है, तो गलत ही होना है प्रेडिक्शन, उसमें क्या है, वो बायसनेस आ गई। कई बार गलतियां की है मैंने भी बायसेस किया है मैंने। no, like if something we see that कि टाइम खराब चल रहा है, ऐसा कुछ है, so we can do the remedy or something for that. हाँ बिल्कुल, रेमेडी कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, तो चीजें हो जाएंगी बिल्कुल। वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, किसी की हेल्थ खराब है, कुछ खराब है, तो ऑलरेडी वो फिजिकली दिख रहा है ना आपको। फिर उसके बाद आप चार्ट देखते हो। चार्ट आप कब खोलते हो? जब कोई चीज फिजिकली अपीयर हो रही होती है। जी, यूजली मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी को अपना चार्ट नहीं देखना चाहिए, उससे फायदा नहीं, यू नो। जब okay, एस्ट्रोलॉजी लाइन पे आ गए आप और ध्यान साधना करने लगे, तो चीजें बहुत चेंज होती हैं। बट देखने में देख सकते, ऐसी कोई बात नहीं। thank you. ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया, कर सकते हैं सब कुछ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये टूल है। जैसे इतना घबराने, आप सोचो गूगल मैप खोलने से पहले आप घबराएं, अरे रास्ते में जाम होगा, ट्रैफिक होगा, तो क्या मतलब, क्या होगा उस आदमी का? मैं गूगल मैप इसलिए नहीं खोलूंगा, या गूगल मैप इसलिए नहीं खोलूंगा कि ट्रैफिक का पता चल जाएगा। ये कोई रीजन हुआ? बताइए, ये कोई रीजन तो हुआ नहीं ना। जी, चलिए ठीक है, आई थिंक just प्रभाकर जी। Yes, just one thing, Pandit ji, like if we don't know the One date of minute. birth and all, then we that way also we Sorry, will learn. Jyotish, sorry. Actually, we are planning to stop the recording. I know it's a just Pandit ji, what do you say? Sanjeev ji, can we stop the recording? नहीं ठीक है, आई थिंक एक बार आंसर दे देते हैं, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। एक बार ज्योति जी का जो आंसर बोला, उनका क्वेश्चन बोला, उनका आंसर कर दें। बताइए ज्योति जी, क्या बोल रही है? जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं,